Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is our most probable question answer module for September month. Okay, let's start with the questions. What is the name of Chandrayaan 2 lander from ISRO which lost its contact when it was 2.1 kilometer away from the surface of the moon? I'm sure that's a very easy one. Everyone knew about it. That's a Vikram lander. Okay, chali great. Which city topped the Knight Frank's co-living index? को-लिविंग इंडेक्स, दिस इज इन एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक, ठीक है, साथ में रहने के लिए दिस इज वंडरफुल थिंग, ठीक है, एंड दैट इज बीजिंग चाइना, दैट्स नंबर 1. नंबर 2 पे टोक्यो है और फिर शंघाई आता है. नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु वन अ सेट अगेंस्ट रोजर फेडरर ड्यूरिंग द यूएस ओपन. ठीक है, यूएस ओपन में रोजर फेडरर के साथ पहला सेट, ठीक है, सुमित नागल साहब जीते थे. ठीक है, एट द एज ऑफ 22 शी हैज डन वंडरफुल, मतलब ही हैज डन वंडरफुल थिंग, है ना. हु वन वुमेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन. ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट टीन, दैट इज टीनेजर, टू विन दिस. दिस इज बियांका एंड्रेस्कू. ओके, शी इज फ्रॉम कैनेडा. Between which two countries South Asia's first cross-border petroleum products pipeline, which is 69 km long, was inaugurated? It was between India and Nepal. Amlekganj in Nepal to Motihari in Bihar. यहाँ से बड़ा फायदा होगा नेपाल को, क्योंकि नेपाल को ये कॉस्ट इफेक्टिव वे में रहेगा. याद रखिएगा ये चीज. ठीक है, कमिंग टू नंबर 6, हु स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ चाइनीज फर्म अलीबाबा. अलीबाबा के चेयरमैन पोस्ट पे थे जैक मा, ये स्टेप डाउन. ठीक है, एंड नाउ द सीईओ डेनियल जांग विल बिकम द न्यू चेयरमैन. नेम द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड ऑल्सो द यंगेस्ट state governor at the age of 58 among all current governors. She is, you can say, Dr. Tamilisai Soundararajan. Okay, so she is the, you can say, youngest one as of now. Oldest one आप बताइए. ठीक है, जो करंट गवर्नर है उनमें मैंने यहाँ पे दे दिया आंसर उनका, दैट इज आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, ओल्डेस्ट एट द एज ऑफ 85. ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मिस्टर नरेंद्र मोदी? ही इज P.K. Mishra. Dr. P.K. Mishra, who was conferred with the United Arab Emirates highest civilian honor, Order of Zayed II. ठीक है, this is UAE और इंडिया के बीच में रिलेशन है. ऑर्डर ऑफ जायद 1 इज गिवन टू मिस्टर मोदी, ये वही फोटोग्राफ है. ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जायद 2 हैज बीन गिवन टू मिस्टर नवदीप सिंह सूरी. ठीक है, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच हैज पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड थाईलैंड, एंड दैट इज नोन एज मैत्री. ठीक है, मैत्री इज हैपनिंग इन मेघालय. ठीक है, उमरोई जगह पे ये हो रहा है मैत्री. वेयर वाज 24th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2019 was held. This was, you can say, in Abu Dhabi. ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल. Navy exercise Samudra Lakshman 2019 is held between which two countries? It is India and Malaysia. ठीक है, मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर. ठीक है, समुद्र लक्ष्मण. Which country became 79th member of ISA? ISA, that is International Solar Alliance. आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, दैट इज द मेन सेक्रेटेरिएट इज इन इंडिया, गुरुग्राम में है ये. और ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज has become 79th member. Which country has inaugurated a Southeast Asia's largest solar power farm called Daotiang Solar Power Complex? ठीक है, ये किसने किया? दिस इज वियतनाम. ठीक है, काफी बड़ा लेकिन से उन्होंने काम किया यहाँ पे. नेम द इंडियन सिटी विच हैज होस्टेड 14th session of COP of UNCCD. What is the full form of UNCCD? United Nation Convention to Combat Desertification. ठीक है, ये पहली बार हुआ है इंडिया में. सो दिस इज ग्रेटर नोएडा दिल्ली में. इस बार का थीम था इन्वेस्टिंग इन लैंड, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज. कमिंग टू नंबर 16, which country has took over conference of parties from China for the next 2 years? ठीक है, this is connected to climate change. Okay, this is India. और इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर will become the chairman. ठीक है, नेम द लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज of Indian Army and Indian Air Force
in which 17 mountain corps of Indian Army will participate for the first time. This is known as हिम विजय. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हिम विजय पक्का पूछा जाएगा. ठीक है. Which Indian city was conferred with the emerging destination of global accessible tourism market in 23rd session of United Nations World Tourism? This is basically Thrissur, Kerala. ठीक है. This is conferred with an emerging destination for a global accessible tourism market. Who was appointed as the chair of parliamentary panel on defense recently? Parliamentary panel के अंदर जुवाल ओराम has become the head of this panel. ठीक है. ये देखिए अलग अलग पैनल बनाई गई है. होम अफेयर्स की पैनल है ये. ठीक है. अमित शाह उसके हेड है. फाइनेंशियल अफेयर्स की जयंत सिन्हा, डिफेंस जुवाल ओराम, एक्सटर्नल अफेयर पीपी चौधरी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस भूपेंद्र यादव, पेट्रोलियम नेशनल गैस रमेश बिदूरी, कोल स्टील राकेश सिंह, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट रमा देवी, ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी सत्यनारायण जतिया, इंडस्ट्री के केशव राव एंड अर्बन डेवलपमेंट जगदम्बिका पाल. और वाटर रिसोर्सेज संजय जायसवाल, कॉमर्स वी विजय साई रेड्डी, लेबर भर्तुआरी मेहताब, एनर्जी राजीव रंजन, रूरल डेवलपमेंट प्रताप राव जाधव, केमिकल फर्टिलाइजर्स एम कानीमोड़ी, रेलवे राधा मोहन सिंह, एग्रीकल्चर पीसी गद्दी गोदूर, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर टीजी वेंकटेश, फूड कंज्यूमर अफेयर पीडीएस सुदीप बंदोपाध्याय एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट जयराम रमेश. ठीक है. Which country is set to host biennial international women youth football championship? ठीक है. This is happening in India. FIFA की तरफ से इसको अप्रूवल मिला है. ओके, चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. अगर आपको पसंद आया है लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल लेने का भूलिएगा मत. ओके, थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.